Dangal is the highest-grossing Indian film of all time. It's also the 23rd highest-grossing non-English language film of all time. On the surface, it looks like a movie about wrestling. So why is it so immensely popular? It's not like that many people love wrestling. The answer is simple. It's a great story. And there's an incredible amount of universally relatable humanity captured in this well-written screenplay. So let's take a look at what really makes Dangal so successful. The premise of a story is the essence of what will interest the audience in seeing the movie. It's what we see in the movie poster. It's what we hear in the logline. Speaking of which, here's the logline for Dangal. Former wrestler Mahavir Singh Phogat struggles to fulfill his dream of winning a gold medal for his country by training his daughters for the Commonwealth Games despite facing oppressive social stigmas. So what are the two main elements we have for the premise of Dangal? Wrestling and social stigmas. So in order for the film to be satisfying to the audience, almost every scene should include one or both of these elements. In other words, it must deliver on the premise. Let's look at the first element of wrestling. We get it immediately in the opening scene. Later, Mahavir oversees the training of young wrestlers and gives a boy money for his hard work. Of course, we see Mahavir training his daughters. Next, we see Geeta wrestling in the sub-junior and junior nationals. At the midpoint of the film, Geeta leaves Mahavir to train at the National Sports Academy. After Geeta starts losing her matches, Mahavir travels to help her train in secret. See how wrestling pervades almost every scene? Now let's look at the element of social stigma in the premise. In the case of this movie, it specifically deals with the gender roles of men and women in the local society. Firstly, since only males are supposed to wrestle, Mahavir wishes for a son. Soon enough, the villagers give their advice for bearing a male. Later, the villagers criticize the girl's training. Mahavir cuts his daughter's hair and we see society's reaction. At Sunita's wedding, we get some nice symbolism of crossing gender roles as Geeta dances. Later, Sunita herself explicitly states the problem of society and gender roles in their world. वरना यहाँ तो हाल यूँ है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका करा लो उससे झाड़ू पोछा. Here's where certain scenes get especially powerful, when they fulfill the premise of both wrestling and social stigmas at the same time. Mahavir trains the girls in wrestling, but they can't do it properly in traditional women's robes. Lacking the proper opponents, Mahavir asks for his nephew to train against his daughters. Mahavir enters Geeta in her first wrestling tournament, a world dominated by men. Notice the comments during the match. So when it comes to the scenes in your story, strive to deliver on the premise in every single one. The film Dangal presents us with a sport for which the rules are unfamiliar to most of the audience. Since the movie finale takes place in the biggest wrestling match of the main characters' lives, it's important to remove any possible confusion about the rules. Remember, when it comes to story, clarity is king. Let's examine how they establish the rules of the game early in the story. And notice how this large amount of exposition becomes invisible because although this information is beneficial to the audience, it's actually a direct result of Mahavir's objective to train his daughters. माटी वाली कुश्ती और मैट वाली कुश्ती में फर्क होता है और मैट वाली कुश्ती में पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3 और 5 Additionally, they do something clever here, using humor to make the exposition more enjoyable. जो तन्ने सामने वाले की कमर पकड़ के उसने घुटनों के बल गिरा दिया तो तन्ने 1 पॉइंट मिलेगा और ग्राउंड पोजीशन में इस तरह पकड़ के जो तन्ने सामने वाले को स्टैंडिंग पोजीशन से खड़े खड़े ही हवा में घुमा के पीठ के बल गिरा दिया तो तन्ने 3 पॉइंट मिल जावेंगे जो तन्ने सामने वाले की बॉडी को उछाल के नहीं था अरे इधर आ Later, when Geeta wrestles in the Commonwealth Games, we also get a recapitulation of the match rules from the announcer. हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैच में 2-2 मिनट के 3 राउंड्स हैं जो 2 राउंड्स जीत लेगा
वो मैच जीत लेगा। संभल कर खेलना होगा गीता को, क्योंकि अगर अब 2 पॉइंट्स और दे बैठेंगी तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण ये राउंड हार जाएंगी। अब इस मुकाबले का फैसला टॉस से होगा, जिसे रेसलिंग की भाषा में क्लिंच बोलते हैं। अगर रेड आया तो नाओमी को अटैक करने को मिलेगा, और अगर ब्लू आया तो गीता अटैक करेगी। This removes any confusion, allowing the audience to enjoy the ride and feel all the dramatic tension as Geeta fights for Mahavir's dream. So if you have something that's out of the ordinary for most audience members, be sure to clearly establish the rules of the game. Just like the premise of the movie, the story spine is also crucial to maintain throughout the entire film. It's what drives the characters to do what they do. To quote screenwriter William Goldman, you have to know what is absolutely crucial in the telling of your story. What is its spine? Whatever it is, you must protect it to the death. Let's go back to the logline of Dangal and see if we can pick out the story spine. Here it is. Struggles to fulfill his dream of winning a gold medal for his country. This is the overriding objective that drives the main character from start to finish. Notice how Mahavir himself even states the story spine. इनकी बस एक ही गलती है सर, कि इनका बाप बावड़ा है। वो देश को इंटरनेशनल रेसलिंग में गोल्ड दिलाने के पीछे इतना पागल है कि उसने बचपन में इनके हाथों से गुड्डे गुड़िया छीन के अखाड़े की माटी पकड़ा दी। Look at everything that Mahavir endures as every sequence in the film adheres to the story spine. The first thing he needs to achieve his dream is to have a son. जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा। गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी है मन में, पर मेरा जो सपना है ना, सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। When an unexpected event occurs, Mahavir ends up training his daughters. मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। And he risks his own relationships in order to train the girls. अपनी जुनून के लिए छोरियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। बस एक साढ़े दे मन ने, अगर गलत साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगा। Mahavir enters Geeta in tournaments against boys, where she finds success. But sticking to the story spine, it's still not enough. आज ताऊ जी का सपना पूरा हो गया। ना, सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब तू अपने लिए नहीं, देश के लिए गोल्ड लावेगी। Mahavir persists in his overriding objective by seeking outside help. मैट लगवा के प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ सर जी। आज आप सपोर्ट करोगे ना, तो कल वो देश का नाम रोशन करेगी। रैम मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से। Mahavir butts heads with Geeta's coach and trains her in secret. सर गीता को सही कोचिंग मिलेगी ना, तो इंटरनेशनल मेंटल जीत के दिखावेगी। यो सिखाए तेरे कोच साहब ने। इस तरह जीतेगी इंटरनेशनल मेडल। तू 55 में ही लड़ेगी और 55 में ही जीतेगी। मैं आ रहा हूं पटियाला। कोच सर ने तो 3 मेडल जीतने से मतलब है, भले वो ब्रॉन्ज क्यों ना हो, पर मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश गोल्ड जीते। This causes him to get banned from entering the National Sports Academy. यो लोग मन्ने भीतर जाने से रोक सके, पर गीता को कोचिंग देने से मन्ने कोई ना रोक सके। Staying true to the story spine, Mahavir continues to train Geeta using video. इस तरह खेल लेगी तो कैसे जीतेगी? ऐसे करते हैं रेसलिंग, बीकी बिल्ली बढ़ के। इस तरह ही लड़ना है तो मत लड़। And finally, in a moment of closure, Geeta wins the gold medal at the Commonwealth Games. Mahavir's story spine finally comes to an end. ताऊ जी के मुंह से वो गोल्डन शब्द निकला जिसे सुनने के लिए हमारे कान पिछले 10 साल से तरस गए थे। शाबाश। Think of the story spine as the cardinal desire that governs all of your main character's actions. It's what will keep your storyline straight and true from beginning to end. Episodic action in stories can occur when unrelated and inconsequential events happen. It can feel like the events happen simply because the story dictates it. One way to avoid this is to think of consequences for characters' actions in the story. Dangal is an excellent example of a story full of consequences. Let's take a look. Mahavir is desperate to have a son, but ends up having 4 daughters despite following the advice of the entire village. So what's the natural consequence? He falls into a funk. उसके बाद ताऊ जी ने छोरे की उम्मीद से और अपने सपने से
दोनों से ही मुंह मोड़ लिया था। ओ महावीर सिंह जी, Later, Mahavir trains his young daughters, forcing them to wake up at 5 a.m. every morning. So of course, what's a natural consequence with teenagers? तो जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी। बस इस पहलवानी से बचा ले। पापा वो पहलवानी जम नहीं रही है, बबीता को। हाँ, बहुत होगी पहलवानी, अब दंगल होगा। ये बल्ब रोज फ्यूज किस तरह हो जाता है? क्वालिटी पापा जी, क्वालिटी। Later, Geeta and Babita go to Sunita's wedding, ditching their training with Mahavir. Even their cousin Omkara joins in the fun. Here's the inevitable consequence. As Geeta trains at the National Sports Academy, she shows her new techniques to Babita. The consequences? Direct conflict with Mahavir. यो अंगूठा इस तरह डाल के। यो सिखाए तेरे कोच साहब ने। इस तरह जीतेगी इंटरनेशनल मेडल। And they end up estranged from each other. And finally, Mahavir ends up training Geeta in secret, directly contradicting the training of her national coach. Here are the consequences. आज के बाद ना आपको एनएसए में आने की अनुमति है, ना इन दोनों को एनएसए से बाहर जाने की। So remember, every action causes a reaction. Think about the consequences for the characters' actions in your story, and the events will unfold naturally. Motifs are elements that are repeated throughout a film to provide symbolism and accentuate emotional beats. They can be physical objects that we see at different times to show the change that occurs throughout the story. First, we have Mahavir's various memorabilia. Then we have Geeta's hair. The physical motif of sweets is repeated in several scenes. छोरा हुआ मन लाडू तो खाता जा। अरे टिट्टू जी साहब मारुति में रखो। दूध पी लेना। सॉरी पापा। इज्जत कर देगी। 15,000 15,150। अरे घनी सीनियर पहलवान हो गई है तू तो। And finally, we have the motif of sand. अपनी माटी की हमेशा इज्जत करना। Quick question. I think this is sand from the wrestling pit back in Balali, but can anybody please confirm if it's actually something else? Let me know in the comments below. And finally, motifs can be found in lines of repeated dialogue. छोरियों के हाथ पैर टूट गए तो? और छोरी के हाथ पांव टूट टाट गए तो टूटन दे। हट्टा कट्टा बनाकर अगले साल फिर ले आना। इस तरह लड़ेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। Planting and repeating motifs in a story can create a richer, more poetic movie-going experience for the audience. It's well known that the best way to create organic conflict is to have characters with directly opposing goals. However, in Dangal, the majority of the characters want the same exact thing, for Geeta to win a gold medal at the Commonwealth Games. This is true for two important characters in the final act, Mahavir and Coach Kadam. This brings us to another excellent way to achieve conflict. Characters may have a shared common goal,
but they have differing methods in which to achieve it. Specifically, despite both of them wanting Geeta to win the gold medal, Mahavir and Coach Kadam have different philosophies when it comes to her wrestling techniques. This creates conflict that cascades into several relationships. First, we have Geeta and the coach. जो गलत ट्रेनिंग मिली है उसे भूलना होगा। आप लोग वही सीखोगे जो मैं आपको सिखाऊंगा। देख अपने पापा की टेक्निक भूल जा। इधर वही सीख जो मैं सिखा रहा हूँ। समझी? Next, we have conflict between Geeta and her own family. तेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अब हर बात पापा के हिसाब से तो नहीं हो सकती ना मम्मी। कोच साहब ने तो कुछ नहीं कहा और वो तो इतने बड़े कोच हैं। ये गलत है मेरी टेक्निक में। ये ज्यादा करेक्ट वाला है। कोच साहब ने सिखाया। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या सिखा दिया तेरे कोच साहब ने जो तेरा बाप ना सिखा पाया। तो फिर आप अपने तरीकों पे भरोसा रखो। मैंने तो अभी भी पापा पे भरोसा है। And of course, we have the most powerful conflict between Mahavir and the coach himself. ट्रेनिंग भी मन नहीं दी सर। सर गीता को सही कोचिंग मिलेगी ना तो इंटरनेशनल मेंटल जीत के दिखावेगी। छोड़ दिया, बाकी मुझ पे छोड़ दो। आपने टाइम वेस्ट करके ठीक नहीं किया। वेट लूज करके लड़ती तो मेडल ला सकती थी। मेडल तो इसने पहले ले आने चाहिए थे कोच साहब, 55 की कैटेगरी में। Notice how this conflict from differing methods is at its peak in the finale when Geeta actually wrestles. देख गीता, आखिरी राउंड है, संभल के डिफेंड करके खेल। अटैक करके खेल। 3 पॉइंट्स मेलिसा को। बोला था डिफेंड कर। कोई ना, अटैक करती रहे। क्या कर रही है गीता? अटैक करके खेलना। This shows us a powerful lesson in creating conflict. Create it through opposing objectives, or create it through differing methods. In Dangal, there is no noticeable singular villain. Instead, the biggest source of antagonism comes from society as a whole. Let's take a look at the collective villain in this movie. First, we have the villagers getting involved with Mahavir and Daya trying to conceive a son. काली गैया को सफेद तिल के लड्डू बाजरे की रोटी में लपेट के उल्टे हाथ से सूरज निकलने से पहले खिला देना। थोड़ा पक्का। देखो बेटा महावीर, कोशिश केवल इतवार को ही करनी है। बाकी के दिन सही हम एकदम अलग अलग। Once Mahavir decides to train his own daughters to wrestle, we get antagonism from his own wife. मैंने तो ना देखा आज तक छोरियों को पहलवानी करते। गांव वाले क्या बोलेंगे? छोरियों के हाथ पैर टूट गए तो पैसे कहाँ से आवेंगे? And of course, we get heavy antagonism from the villagers as well. छोरियां ना चूल्हा चौका करती है चिल्ला के, कुश्ती कराटे नहीं। बेशर्म हो गया, अपनी छोरियों को छोटी छोटी निक्कर पहना के छोरों के साथ कुश्ती करवा रहा है। इनकी माँ ने भी तो मुंह में दही जमा रखा है। Geeta and Babita get it from their various classmates at school. पहलवानी कर करके तुम दोनों की चाल एकदम मर्दानी हो गई है। When Mahavir needs Omkar's help to train his daughters, he gets antagonism from his own brother. छोरियों से पहलवानी करवा रहे हो, वो कम था के जो अब छोरों के साथ पहलवानी करवाओगे? Once Geeta is ready to take on competition, the wrestling community itself is an obstacle. जिस दिन रोटी बेलने का कंपटीशन कराऊंगा ना, उस दिन लेना गीता जी को यहाँ। दंगल हो रहा है। Mahavir's manager at work is another source of antagonism. छुट्टी 2 महीने की। गीता को नेशनल के लिए तैयार कराना है सर। देख भाई, 2 महीने है तो तू भूल जा। छोरी का ब्याह होता तो कुछ सोच लेता। Once he quits his job, Mahavir also faces antagonism from the Wrestling Federation. जेंट रेसलिंग हटा दो, कोचिंग, डाइटिंग, ट्रैवलिंग, इक्विपमेंट वगैरह निकाल दो तो लेडीज रेसलिंग के लिए बचता है इतना। Interestingly, it's this faceless villain that undergoes a character arc. Look at the gradual change that we see as the Antagonistic Society undergoes a positive change. गीता और बबीता दंगल ही नहीं, दिल भी जीत रही थी। गीता कुमारी ने हरियाणा स्टेट टीम में सिलेक्ट होकर हमारे स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करा है। It's interesting to see the villain taking the form of a large society in Dangal. Let me know in the comments if you can think of other movies that follow this model.
Foil characters help accentuate the main character's traits and actions by providing similar yet different outcomes. They mirror a character, yet provide contrast with something different. Foil characters, just like any effective secondary character, will also affect the outcome of the story. For example, in the beginning of the story, Mahavir is desperate to have a baby boy, but he ends up having 4 daughters. Notice the foil character here. ओ महावीर चोरा हुआ मैंने लाडू तो खाता जा This pushes Mahavir over the edge into his gloom. In this example, Geeta complains about how unfair her life is. Sunita steps in as the foil character, causing a turning point in the story. कौन बाप अपनी छोरी से पहलवानी करवाता है? ऐसा बाप भगवान किसी को ना देवे। थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है, ताकि तुम दोनों कुछ बन सको। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? Here, the judges seem united in not allowing Geeta to enter the tournament, but we have a foil character that changes the course of the story. छोरी कहा छोरे से दंगल लड़वाओगे? भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही। हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। अरे मंदबुद्धि जरा सोच, जिस शहर ने आज तक छोरियों को लड़ते हुए नहीं देखा, उस शहर में छोरी छोरों से लड़ने अखाड़े में उतरेंगे। दंगल हिट हो जाएगा हमारा। Early in the story, Geeta receives an antagonistic response from males in her home village. The foil characters at the National Sports Academy smile at her. This shapes her future actions as she embraces her femininity. Eventually, Geeta starts to get soft in her training and begins to lose matches. Meanwhile, as a proper foil character, her sister Babita trains relentlessly and wins her matches. Foil characters are an excellent way to contrast traits and actions of the main characters. When you talk about a movie with such global acclaim, there's usually something universally relatable in the story. That comes easily when humanity is woven into the fabric of the screenplay. Let's see what aspects of humanity we can relate to in Dangal. First, we can all relate to the suffering that comes with pushing ourselves to our limits. Next, we have the special bond between a father and his daughters. जहाँ गुरु होगा ना, वहाँ बाप नहीं हो सकता। आसमान के सितारे नैना शाबाश। Speaking of universality, who can deny the cruelty of time as old age comes to us all? क्या बात है पापा? आज लेट हो गए। उम्र हो गई है। गीता जूनियर से सीनियर हो गई और ताऊ जी सीनियर से सीनियर सिटीजन हो गए। किसी को तो बताना ही था कि पापा के तरीके कमजोर हैं। उनके तरीके कमजोर ना है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया। तन्ने भी नया कोच मिलेगा और तेरा पापा एक बार फिर पुराना हो जाएगा। Baked into the premise of the film, there's a constant desire for a better world with gender equality. मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि छोरे उनको देखने नहीं, वो छोरों को देखने जाएंगी। तेरे साथ उनके जैसी लाखों छोरियां जीतेंगी। हर वो छोरी जीतेगी जिसको लोगों ने छोरों से कम समझा है। And finally, like many great films, there's substantial wish fulfillment for the audience. Specifically, who doesn't dream of bringing pride and glory to their home country? बहुत बढ़िया लड़ी गीता, मतलब मलाली का नाम रोशन कर दिया जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है। वेल डन गीता, अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया इंडीड। Capture the wonderful aspects of humanity in your story, and it will have a universality that will speak to the whole world. So what are your thoughts? Is Dangal the greatest Indian film of all time? Let me know in the comments below. And if you haven't already, please be sure to subscribe to be notified of upcoming videos from Script Sleuth. More great content is on the way. Thank you so much for watching.